बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 16th लेक्चर है। आज का लेक्चर शुरू मैं पिछले लेक्चर की थोड़ी समरी दे दूँ। रिलेशंस, वन टू वन रिलेशन हमने लास्ट टाइम किया, मैनी टू मैनी रिलेशंस, वन टू मैनी एंड मैनी टू वन रिलेशन, रिलेशंस ऑन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स विद एग्जांपल्स, and relation on power set. In today's lecture we are going to have again the topic of relation, और relation से related हम करेंगे inverse of a relation, जिसमें के inverse of a finite relation, inverse of an infinite relation, directed graph of a relation, and last पे properties of relation. इनवर्स ऑफ अ रिलेशन मीन्स इसको हम डिफाइन करते हैं। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन अ रिलेशन आर इनवर्स फ्रॉम बी टू ए कैन बी डिफाइंड बाय इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ all the ordered pairs of R. We can define this as, let R be a relation from A to B. Define the inverse relation R inverse from B to A as follows. So R inverse can be defined as y comma x, where x comma y belonging to the relation R. Equivalently, for all x belonging to A and y belonging to B, y comma x belongs to R inverse if and only if x comma y belongs to the relation R. It is a finite relation, and let's see how we will find inverse of this finite relation. Let A is the set 2, 3, 4, B 2, 6, 8, and let R be the divides relation from A to B. For all x, y belonging to A cross B, x is related to y if and only if x divides y. X divides y means x fully divides y, there is no remainder. State explicitly which ordered pairs are in R and R inverse, and draw arrow diagram for R and R inverse. So here in this example, R is defined as x divides y means k 2 divides 2. Yes, 2 divides 2. Similarly, 2 comma 6 means 2 divides 6 fully and there is no remainder. 2 divides 8, 3 divides 6 and 4 divides 8. तो यहाँ से हमने वो एलिमेंट्स चूज किए कि इस तरह से चूज किए such that x, y जो है वो इस तरह का होगा कि x divides y. तो R inverse जो inverse relation है, that we can write as 2, 2, 6, 2, 8, 2, 6, 3 and 8, 4. For all x, yx belonging to B cross A, y inverse related with x if and only if y is a multiple of x. So inverse relation को हम define कर सकते हैं that y is related with x if and only if y is a multiple of x, right? Now let's have inverse of finite relation. हम उसी एग्जाम्पल पे हैं। ये हम इसकी एरो डायग्राम से देखते हैं कि ये जो रिलेशन R है ये क्या शो कर रहा है। 2 is related with this 2, ये एरो आपको नजर आ रहा है। 2 is related with 6, 2 is related with 8, 3 is related with 6 and 4 is related with 8. जब इनवर्स रिलेशन देखेंगे तो inverse relation will be from B to A in this direction, and this 2 is related with 2, 6 is related with 2, 8 is related with 2 and 8 is related with 4, 6 is related with 3 also, right? तो ये एक इनवर्स डायरेक्शन में एक और रिलेशन डिफाइन हो गया है जिसको कि हमने इनवर्स रिलेशन कहा है, राइट? This R inverse is written as from B to A. अगर हम इसको डायरेक्शन वही रखें जो रिलेशन R की डायरेक्शन है, तो फिर हमें सेट रिवर्स करने पड़ेंगे। यहाँ पर सेट A था और यहाँ B था, अब हमने B को पहले लिख लिया फिर A को लिख लिया। So B is related with A with through the inverse relation.
So again this is an arrow diagram for the inverse. Now let's come inverse of an infinite relation. So infinite relation, we know that there is some set which is an infinite set, और जो दूसरा set है जहाँ पे relation जा रहा है जिस set से दूसरे set पर, तो दूसरा set भी infinite set है. तो इस केस में हम real number system को, real numbers को हम as infinite set consider कर रहे हैं. तो इसमें जो relation है वो रियल नंबर से रियल नंबर्स पर ही डिफाइंड है, इसीलिए इस रिलेशन को इनफाइनाइट रिलेशन कहा जाता है. फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर क्रॉस आर, x is related with y if and only if y is equal to 2 times mod of x. So we are going to draw the graph of r and r inverse. So here we can understand that x is related with y means that y is 2 times multiple of x mod. That is, if we are taking x equal to 0, then y will be 2 times multiple of mod of x, yani 2 multiplied by 0 is 0. So y will be 0. If we are going to take x equals to 1, then and if we put x1 here, then this is 2 multiplied by 1 mod is 1, therefore 2 multiplied by 1 is 2. So in case of x equals to 1, y is 2. If x is minus 1, then minus 1 mod is plus 1, and that is plus 2, so y is 2. Similarly, other values we can calculate, and R inverse will be the ordered pair y comma x such that y is equal to 2 times mod of x. So here, if we are taking y equal to 0, then x will be 0. So all those values will be same for y and x, but only r inverse in the case of inverse relation, ordered pair में x और y एक दूसरे से replace हो जाएंगे, right?